Hello everyone, welcome back. We were discussing about the topic genetics, that is unit 6 according to the syllabus of biology. Alright, so from quite a while, I guess it's now 1 week and we are, this is the last topic and we have almost completed the topic of 12th class bio. That is chapter 5 of the NCRT, the principle of variation and inheritance and variation. So this is the chapter 5 and we have discussed all the concepts till now, and today we are going to be discussing something very important. नीट में कम से कम आप 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर एक्सपेक्ट करिएगा. ठीक है, तो ये टॉपिक है मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में. हमने पढ़ा मेंडल के लॉज. ठीक है, हमने देखा मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होता है, फिर हमने देखा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सोटॉन एंड बोवेरी. All right, so this theory was given widely accepted, and many points were stated. The concept of linkage, recombination, mutation, all these were found and discussed. And this theory was verified by T. Morgan. तो हमने अभी सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ लिए. अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये सारे जो जेनेटिक जो भी डिसऑर्डर है वो कैसे कॉज होता है. जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि ह्यूमंस में जो जेनेटिक डिजीजेस है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हो या क्रोमोसोमल हो, वो कैसे कॉज होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो किस टाइप का डिसऑर्डर है, किस एब्रिवेशन के वजह से वो डिसऑर्डर कॉज हो रहा है, ये सब हम देखेंगे आज के लेक्चर में. Fine. So I'm Janani Saptharishi. I'm going to be teaching biology for class 12. So I'm associated with Unacademy. Unacademy is India's largest online learning platforms. And what will you get from Unacademy? You will get daily live classes. So in Unacademy, you have daily live classes to engage in. It is very interactive. You can ask your doubts, you'll have polls. It is just just amazing. You'll enjoy it, you'll enjoy learning, you'll understand more concepts. If there will be more clarity, you'll have live test quizzes. You can evaluate your performance and know where you stand. And we prepare you for all the entrance examinations conducted throughout India. You All you have to do is get the subscription, and we offer a very structured courses. So by structured courses, I also mean that we provide complete syllabus coverage that is required for your desired examination, what you wish to crack. For example, if you are interested for the NEET examination, we will give you complete syllabus coverage for physics, chemistry, biology, and you'll have unlimited access to all the notes, to all the study materials, to recorded and live lectures, and you can watch it at your comfort, at your ease. In such a situation, what else we can expect? You could make the you should make the most out of it, and you'll have daily live classes, and you will prepare with the top educators on board of India. So you have it is your choice with which educator you are comfortable with, at what timing you're comfortable. It is completely up to your comfort, and we have a very comprehensive syllabus. Along with that, all you have to do is download the Unacademy learning application, install it, and get the subscription. And for more information, you can connect with us through Telegram directly and talk to us. So you just, copy this link and type it in the URL and click join. All this information is provided in the description box below. So as soon as you subscribe, these are the courses that Unacademy offers you. So you have a 1 month up to 12-month course. So what I recommend you, and the most beneficial one, is the 12-month course. Why? Because it is very economical. You get a complete 12-month study plan
in just 12 months in just 15,000 rupees. That is very economical. And along with that, for preparing like any examinations like NEET, you will at least need 12 months in hand. You'll at least need 1 year in hand. So if you're in 11th, this is the time. Please get your subscription. And if you're in your class 12, please go for the 6-month subscription. And there is an additional gift for you all from my side. If you'll use my code Janani, that is my name, if you'll use this as your referral code, you will avail an extra 10% discount on all this duration courses, and you can avail a 10% discount. So now the 12-month plan is just at 13,500. That makes it really very economical, and you should make the most out of these things, and we will help you, and definitely you will be able to crack it. So let us start with the genetic disorders. So what do I mean by a genetic disorder? So the genetic disorder can follow the pattern of autosomal dominant, autosomal recessive, or it can be sex linked. It can be again sex linked dominant, sex linked recessive, और इट कैन इवन फॉलो द पैटर्न ऑफ डुप्लीकेशन, यानी कि जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है ना, अगर उनमें से एक कोड जो हमने देखा वो डुप्लीकेट हो जाए, या फिर नॉन डिसजंक्शन, यानी कि जैसे डाउन सिंड्रोम होता है ट्राइजोमी से, मतलब 3 क्रोमोसोम का प्रेजेंट होना, ठीक है। फिर आता है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक क्रोमोसोम जो हमें चाहिए वो वाई क्रोमोसोम या एक्स का जो डबल है वो एब्सेंट है, ठीक है। ऐसे नॉन डिसजंक्शन हो जाते हैं। वी विल स्टडी ऑल दिस इन डिटेल टुडे। देन ईदर विद डिलीशन, यानी कि अगर ये हमारा क्रोमोसोम है तो इसका जो एक पार्ट है वो हो जाता है डिलीट, इसे कहते हैं हम डिलीशन, ठीक है। तो ये जो सिरडू चार्ट है ये क्यों होता है, जब क्रोमोसोम 5 का जो एक पार्ट है ये आर्म सेल से डिलीट हो जाता है। इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या, यानी कि एक जो अमाइनो एसिड का कोड है, कोई भी ले लीजिए AUG या जो भी है, उसका अगर इन्वर्जन हो जाए, ठीक है। X-linked recessive, you'll have hemophilia, you'll have red-green color blindness. So what all I have ticked, we'll be studying in detail today. Or translocation. Translocation, remember we had discussed in a video the Philadelphia occurrence in the chromosome, between the chromosome 9 and 22. This is the most chromosome. So what basically happens is chromosome 9 breaks one part and the chromosome 22 will also break. So that part from chromosome 22 will go and attach to that of the 9, and from 9 the broken part will attach to the chromosome 22. So basically now they are translocated. All right? Fine. So we are going to discuss Down syndrome. We have already discussed a part of Down syndrome, so I'll just tell you what it is. And we'll discuss Turner syndromal retail, Klinefelter syndrome, along with hemophilia and color blindness. And I have there is a lecture where I have discussed about autosomal dominant and the recessive genes. But just to clear the basics, so what is an autosomal disorder? So autosomes are basically the chromosomes 1 to 22. Alright, so in the case of human, we have 46 or 23 pairs of chromosomes. Alright, out of that, chromosome 1 to 22 is autosomes. Alright, what do I mean by autosomes? By autosomes, I mean that are associated with all the morphological characters and the working of the body, but are not related to any of the sex determination or sex related characters. All right. So the non-sex chromosomes are the autosomes. And the 23rd pair, that is a sex chromosome, is called as the allosome. All right. Yes. So what is autosomal dominant and what is autosomal recessive? So basically, when we have a genotype like a heterozygous condition, and in a heterozygous condition, the disease is observed in a person. Alright, तो अगर ये हमारा गैमीट है एंड इसमें हम डिजीज देख पाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कैपिटल A है, यानी कि जो
डिजीज्ड कंडीशन है वो डोमिनेट कर रहा है हमारे नॉर्मल रिसेसिव कंडीशन को, तो इसे कहते हैं हम ऑटोसोमल डोमिनेट। जब इस एलील में भी हमें डिजीज देखने मिले। एंड रिसेसिव कंडीशन क्या होता है, जब भी हमें ऐसे, हाँ, रिसेसिव कंडीशन में ना सिर्फ ऐसे स्टेट में डिजीज देखने मिलेगा, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिजीज देखने नहीं मिलेगा। एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट में या तो कंप्लीटली दोनों डोमिनेंट हो या हेट्रोजाइगस, ये दोनों चीजों में हमें डिजीज देखने मिलेगा। सो दिस इज द बेसिक मेथड दैट यू नीड टू रिमेंबर टू differentiate between the autosomal dominant and the recessive trait. All right. If you have any doubts, you can put it in the chat section below. Moving forward to the genetic disorders. Genetic disorders किसमें देखने मिलते हैं? It is found in human beings. And what might be the reason for this? The reason for this is inheritance of genes or chromosomes. हमें जो genes या chromosome inherit होते हैं, अगर उनमें कुछ defect हो तो हमें, या chromosome का जो structure है वो alter हो जाए या change हो जाए, अपने original फॉर्म से चेंज यानी कि ऑल्टर हो, तो हमें देखने मिलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, so that is because of the inheritance or the change genes or chromosomes. So this word you have to remember, and you have to remember the word altered. So we have two types of disorders. One is the Mendelian disorders and one is the chromosomal disorders. So these are the two different types of disorders we'll be discussing. So Mendelian disorder is basically what is carried forward from one generation to the another. यानी कि अगर एक पेरेंट को कोई डिसऑर्डर है तो वो हमें चाइल्ड या उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने मिलता है। इसे हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ऑलराइट, फाइन, लेट्स जस्ट, हाँ, फाइन। So what happens in Mendelian disorders? All monogenic diseases, all right? All monogenic diseases, that is genetic disorders showing a Mendelian patterns. So do you know why these disorders are caused? ये disorders क्यों होता है? क्योंकि इनमें cause होता है mutation, and where this mutation is caused, it is caused in the structure of the DNA. So the basic difference between a Mendelian and a chromosomal disorder. Wait. So what happens is that this mutation will cause in case of the Mendelian disorder, this mutation causes a single basic defect in the pathological consequences. That means there is a mutation in a structure of the DNA, like the amino acid. Alright, so what it causes are pathological consequences. That means either it can be a mental retardation or any of the consequence that a patient suffers from. Alright, so what is the basic difference between the Mendelian and the chromosomal disorder? So what happens in case of the chromosomal disorder, that there is either duplication or trisomy or monosomy of a chromosome. All right, so chromosomes are either doubled, or there is a trisomy condition or a monosomy condition. All right, and it is not necessary that this will be passed from one generation to the another. There is no flow. All right, but in case of the Mendelian disorders, what happens is that it basically the diseases that and the characters that flow from parents to the offsprings, parents to the offsprings.
All right, this is clear. So do these consequences occur in all disorder cases? This consequence occur in only some cases. Let us see how. Now, what is a monogenic disease? Monogenic disease can be either dominant or recessive. That means autosomal or sex-linked. Alright, so autosomal means affecting the chromosome from 1 to 22 and sex-linked is basically allosomic. Alright. How can these disorders be found then? So what happens is that the Mendelian pattern of inheritance of the Mendelian disorders can be traced in a family with the help of a pedigree. All right. और ये सारे डिजीजेस हम कैसे पता करते हैं कि वो कौन से जनरेशन से कहाँ फ्लो होता है? ये होता है एक पेडिग्री के हेल्प से. Mendelian disorders are the following that you need to remember: hemophilia, sickle cell anemia, phenylketonuria, and Duchenne muscular dystrophy, or commonly known as DMD. Other than that, we have cystic fibrosis, colorblindness, thalassemia, and albinism. Alright, organisms phenotypically similar but genetically different are they are known as heterozygous. Phenotypically similar because what happens in the case of the dominant one, even this will show a disease but this will show a disease, but these are genetically very different. All right, starting with the hemophilia. All right, so what happens in hemophilia? So basically, see, what happens is these are the normal conditions of your erythrocytes or the RBCs. All right, but what happens here is it forms a clot when the platelets are activated. All right, if there is a wound, uh, immediately there is a platelet, that is thrombosin, acts and it will prevent the flowing of blood. So this is the normal condition I'm talking about. But in the case of hemophilia, it is also known as the bleeder's disease. Why? Because the oozing out of the blood is not formed. Why? Because no clots, that means no platelets, or there is no mesh-like formation by the thrombosin. Alright, so what it is caused by the deficiency of the clotting factor. तो ये जो ब्लड है वो अपने आप को क्लॉट करके ब्लड फ्लो स्टॉप नहीं कर पाता, एंड बिकॉज जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 के डेफिशिएंसी के वजह से कॉज होता है. यू नीड टू रिमेंबर दिस कॉज, इट इज वेरी important. We have hemophilia A and hemophilia B. So hemophilia A is caused by the clotting factor 8 and hemophilia B is caused by the clotting factor 9. Alright, please remember this. And both are X-linked recessive disorder. Alright, so if you're given a X-linked pedigree and you have options and you have to select which disease can it represent, so please remember that the possible answer will be hemophilia. It is an X-linked recessive, यानी कि recessive यानी कि वो केवल जब भी ऐसे जीनोटाइप होगा ना तभी देखा जाएगा, heterozygous and dominant में नहीं देखा जाएगा. Now coming to hemophilia C. It is caused by the deficiency of the clotting factor 11. ठीक है, A कौन से इसमें था? A था 8 में, B 9 में, C जो है वो 11 में. Alright, and it is an autosomal recessive disorder again. हाँ, तो बेसिकली अरुण पाटिल, हेमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं होता है. ठीक है, तो ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली एक छोटी सी भी कट होना तो ब्लड वहां से इट विल कीप फ्लोइंग एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट. Now what happens, it now this slide represents the symptoms. All right, तो हीमोफीलिया अगर हो गया तो क्या होता है? It impairs the body's ability to control clotting. Clotting जो है वो control नहीं हो पाती. A single protein that is a part of the cascade, that means the death of the reactions involved in the clotting of blood is affected. All right, so
Hi, Harman. Fine. So, hemophilia is more likely to occur in males than in females. Now, let's see why. All right. So, इसमें क्या आता है, देखो जो फादर है ये है, इसमें क्या है, फादर जो है उसे हीमोफीलिया है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये जो है एक्स क्रोमोसोम के फादर को इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो अभी जब हम इसका क्रॉस बनाएंगे तो हम देखेंगे जो डॉटर्स है ना वो बनते हैं कैरियर्स। मैंने आपको क्रॉस बनाना सिखाया था, अगर आपको डाउट है तो आप पूछिए, मैं वापस एक बार बना दूंगी। एंड जो सन्स है उनमें होते हैं हेटेरोगैमेट्स, ऑलराइट, हेटेरोगैमेट्स, ठीक है। तो बिकॉज मेल में होते हैं हेटेरोगैमेट्स, यानी कि एक्स एंड वाई, दो अलग टाइप के गैमेट्स, इसीलिए हेमोफिलिया जो है, अभी देखिए इनके पास सिर्फ एक एक्स है, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। This is the reason why it more likely occur in males. All right. So because there are only one X chromosomes, in the first parental stage, the sons are unaffected. But in the second, so basically it has a crisscross inheritance. इसका मतलब क्या हुआ? Inheritance. ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि पहले सन को था, ठीक है, इसने बनाया कैरियर डॉटर, एंड कैरियर डॉटर से सन के ग्रैंडसन को इफेक्ट हुआ। इससे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो कैरियर डॉटर बनाया, कैरियर डॉटर से अभी किससे, यहाँ पे जाके इसने अपने ग्रैंडसन को इफेक्ट किया और हीमोफिलिया कॉज हुआ। सो दैट इज व्हाई इट इज अ रिसेसिव टाइप। ऑलराइट। So this is because females have two X chromosomes while male have only one. So the defective genes of the X will certainly express it in the male who carries it. All right, male who carries it, मतलब I don't mean that male are the carriers. Male who carries it मतलब यहाँ पे जो मेल के पास जो डिफेक्टिव जीन है ना वो है। फाइन। हाय भरत, हाउ आर यू? So, at what condition is hemophilia expressed? So, in a female, when it has a double recessive X chromosome, अभी तब एक फीमेल में हेमोफिलिया कॉज हो सकता है. So, what might be the reason for this? Hemophilia is caused by a recessive allele on the X chromosome. So, the chance of the female having this disease is very rare, but it is not impossible. All right. सो फीमेल्स आर मोस्टली एसिम्टोमेटिक कैरियर्स। फीमेल्स जो कैरियर होना कॉमन है, बट फीमेल का इफेक्ट होना रेयर है। क्यों? एंड कब, ये देखिए वापस ये है हमारे पास जो मेल है वो अफेक्टेड है, ये है अनअफेक्टेड मदर, ठीक है। इन्होंने डॉटर को कैरियर बनाया, कैरियर डॉटर है, अनअफेक्टेड फादर है, हीमोफिलिक सन बनाया, एंड वापस से एक जो डॉटर है यहाँ पे कैरियर है, ये हुआ कैरियर मदर जब उन्होंने मेट किया अनअफेक्टेड फादर के साथ। ऑलराइट। नाउ so around 50% of his grandsons have the disease. Now what will happen, you know that the pedigree of the Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants, as she was the carrier of the disease. Queen Victoria was the carrier of this disease. All right, hence this is also known as Queen's disease. ठीक है, इसे क्वींस डिजीज भी कहा जाता है। हाय उरूज। सो फाइन। अब देखते हैं फीमेल में ये डिजीज कब कॉज हो सकता है। तो मेरे पास है carrier female and I have a diseased male. So C basically represents the affected gene. Diseased male, sorry, Y होना चाहिए। तो ये है X diseased male, ठीक है, ये शो कर रहे हैं डिजीज। ठीक है, अब हम इसके ऑफस्प्रिंग्स बना।
नॉर्मल मेल, अफेक्टेड मेल, इसको हुआ है डिजीज, ऑलराइट। कैरियर फीमेल, ये है कैरियर, एंड जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी था इस फीमेल को क्या हुआ, दोनों ही रिसेसिव कंडीशन में मिले हैं, ऑलराइट, बोथ आर इन द रिसेसिव स्टेट एंड इट इज अ diseased condition, alright, hence this, when there is a carrier female crossing with a affected male, इस कंडीशन में जो है ऑफस्प्रिंग्स, फीमेल ऑफस्प्रिंग्स भी अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है, तो ये कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया। फाइन, Queen Victoria passed hemophilia on to some of her descendants, all right. Now, hemophilia, there is an unaffected mother, affected father. क्रॉस हुए, क्या बना, नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल सन, ठीक है, सॉरी ये नॉर्मल डॉटर नहीं, ये हुआ कैरियर डॉटर, ठीक है, कैरियर डॉटर बनेगा और नॉर्मल सन। अगर अभी कैरियर मदर है और अनअफेक्टेड फादर है, ठीक है, कैरियर मदर एंड अनअफेक्टेड फादर, ऑलराइट। अब क्या बनता है, ये कैरियर मदर अनअफेक्टेड फादर वापस बने कैरियर, दिस इज अ कैरियर फीमेल एंड अ अफेक्टेड सन, ऑलराइट, सन अफेक्ट हुआ, डॉटर वापस से कैरियर बनी। सो when the father has hemophilia and the mother is unaffected, none of the sons will have hemophilia and all the daughters will act as a carrier. When the mother carries the hemophilia disease and the gene is unaffected, so then what happens? There is a 50% chance, all right? So यहाँ पे जो है mother carry कर रही है, so now there is a 50% chance that the birth of each son, there is a 50% chance that the son will suffer from hemophilia, and there is a 50% chance at each birth that the daughter will be carrier. तो यहाँ पे जो है हमें जो प्रोबेबिलिटी था उसके अभी डिफरेंस देखें, यहाँ पे ऑल डॉटर्स आर कैरियर, यहाँ पे सिर्फ जो डॉटर्स है उसके उनके 50% चांस है कैरियर होने के, ठीक है, and there will be no affected sons. Here 50% sons are affected and 50% daughter are carriers. फीमेल ऑफस्प्रिंग तब इफेक्ट होंगे जब जैसे कि मैंने बताया कैरियर फीमेल होती है और अफेक्टेड मेल होते हैं, एलील की, all right, so allele is basically what represent normal and what represents hemophilia. So these are the female genotypes, these are the male ones, all right. Now a carrier female with a normal male, so half daughters are the carriers. So see, यहाँ पे क्या है, फीमेल जो है वो कैरियर है एंड जो मेल है वो नॉर्मल, carrier female, normal male, half sons affected and half have the disease. But the Punnett square basically has an affected male. यहाँ पे normal नहीं, ये Punnett square में affected होना चाहिए. Is affected, all right? तो अब देखिए affected में क्या बनेंगे, ये तो जो है वो है, अच्छा एक सेकेंड ना, हम एक बार जीन की देखते हैं, एलील की देखते हैं। अच्छा तो देखिए यहाँ पे हमें कहा है कि ये होता है फीमेल जीनोटाइप्स एंड ये है मेल, ऑलराइट, फाइन फाइन फाइन। So it is a recessive, so the small h represents the disease. So basically here it is correct, the female is the carrier and it is mating with the normal male. तो ये मेल जो है नॉर्मल है, तो ये फीमेल कंप्लीटली नॉर्मल हुई, ठीक है, मेल भी कंप्लीटली नॉर्मल हुआ, एक जो मेल है वो इफेक्ट हुआ एंड ये जो फीमेल है वो कैरियर बनी, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे जो मेल है वो इफेक्टेड है, फीमेल कैरियर है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना मिलता है,
carrier female and affected male. So this is the answer for your question. Carrier female, affected male. Equal chance of affected male and female progeny. Even the female is affected with the disease. Alright, so even the female is affected with the disease. Now normal female and the affected male. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों बन जाते हैं carriers and no sons are affected. Now we have the affected female and affected male. All the progeny are affected. तो ये 4 पन्नेट स्क्वायर आप खुद बना के देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. Genotype, this represents normal female and this is the normal male. And the small h represents the diseased allele. Alright? This is what is given in the slide. Now coming to the hemizygous males are affected. By what that I mean, that is hemizygous means because they have only one X, they don't have two X. Alright, that's why hemizygous. The incidence is much higher in males than the females. So heterozygous females are unaffected and there is no male to male transmission of the disease. As I explained you, it is a crisscross inheritance and the carrier female may show a variable expression due to lionization. By that what I mean, variable expression means ये जो कैरियर है इसको जब आप अनअफेक्टेड फादर से क्रॉस करिए तब क्या होता है, इनमें से एक ही डॉटर होगी जो एक ही डॉटर होगी जो कैरियर है, एक है अनअफेक्टेड. इसे हम कहते हैं लायोनाइजेशन. ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं. एंड एक और चीज जो होता है, जो कैरियर फीमेल होता है ना, उनमें लायनाइजेशन के वक्त क्या हो जाता है ना, एक जो एक्स है ना ये कभी कभी साइलेंस्ड किया जाता है, एक हो जाता है वो, एंड तब वो डिजीज कॉज कर सकता है. ठीक है, ये उतना बड़ा एक नीट में तो ये सब नहीं पूछा जाता, ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है. Bleeder's disease is also called as hemophilia. Hemophilia A is due to the deficiency of factor 8. B होता है 9 की वजह से, C होता है 11 की वजह से. Now coming to the next disease of sickle cell anemia. What is chromosome? Chromosome is basically a highly condensed form of DNA. हम क्रोमोसोम की बात तब करेंगे जब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया is basically autosomal recessive genetic condition that is also a blood disorder. Autosomal recessive. What happens here? Now the red blood cells are categorized by an abnormal, rigid, sickle-shaped हाइपोक्सिया कंडीशन. इसका मतलब क्या है, नॉर्मल जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना वो इस तरह दिखने चाहिए. इट शुड बी ओवल, it should have high surface area. All right, what happens in the sickle shape is that these normal RCBs look somewhat like this, highly reduced surface area. It is not oval, it is somewhat sickle shaped. All right, and hypoxia condition. What is the main function of the erythrocytes? To carry oxygen. But what happens in the sickle cell anemia condition? That what happens that it becomes deoxygenated. It lacks oxygen. Hypoxia. All right, lacks oxygen. So basically RBC का main function ही disrupt हो जाता है. Occurs at high altitudes at physical stress. High altitudes में oxygen level generally कम हो जाता है. So what happens that sickle cell starts clumping up. तो ये जो sickle cell shape हमने जो structure देखना, ये साथ में clump होना, साथ में जुड़ना शुरू हो जाते हैं. And they clog the small blood vessels. So what happens is they form a clot in the blood vessels. And once they form this clot, what happens is that they will prevent the flowing of the
blood. Fine. Other symptoms include organ damage, physical weakness, and pain and paralysis. You know, sickle cell anemia is also a very popular example for the pleiotropy. Now, why it is known best example for the pleiotropic trait is because it causes, see, one single gene, that is the HBS, all right. ये एक सिंगल जीन इतने सारे ट्रेट्स कॉज करता है, इसीलिए इसे हम प्लियोट्रॉपी भी कहते हैं. One gene having multiple traits. All right. Sickle cell anemia is controlled by a single pair of alleles. All right. So this is the HBA and HBS. And what it will affect? It will affect the chromosome 11. Very important. Homozygous individual for sickle cell anemia, that is this state. All right. This state will express the diseased phenotype. Heterozygous conditions, that is either the HBA, HBS appear unaffected, but they are still the carrier for the disease. Fine. So this is the sickle cell and this is the normal blood cell. Now, points to remember. Even though two sickle cell alleles are necessary to cause a sickle cell, please read this slide and try to understand it. What happens even though two sickle cell anemia are necessary to cause the disease, one dose, all right, can affect the phenotype. मतलब जो सिर्फ कैरियर्स भी है उनके भी phenotype को ये चीज affect कर सकती है. So the person heterozygous to sickle cell trait can usually lead a healthy life. So sickle cell anemia is caused by a point mutation. Point mutation in the DNA that codes for the beta globulin polypeptide chains. All right. Remember, it is an example of point mutation. Why? Because it will cause a mutation in the beta globulin polypeptide chains of the hemoglobin molecule. All right. Now, it will cause the replacement of the glutamic acid in the sixth position of the valine. What will happen in this chain? That it will replace glutamic acid in the sixth position with valine. So a point is mutated, hence it is called a point mutation. Now, in prolonged periods, all right, what happens? Reduced oxygen content in the blood. Heterozygous person may suffer from symptoms or SCD, as both normal and the sickle cell hemoglobin are formed in them. तो अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में हेट्रोजाइगस ये रेसेसिव है तो ये केवल इस जीनोटाइप को अफेक्ट करता है, बट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड में अगर ऐसे ये जीनोटाइप में क्या होता है कि प्रोलॉन्ग पीरियड में भी बोथ नॉर्मल एंड सिकल सेल आर प्रेजेंट, तो ये सिकल सेल उनमें भी जो है क्लॉटिंग क्लॉगिंग कॉज कर सकता है ब्लड वेसल्स में. ऑल राइट. And they may also suffer from symptoms. Heterozygotic advantage. Now, what happens is that due to the codominance of the alleles, what this phenomenon means? This means that in the heterozygous conditions for sickle cell anemia they are resistant to malaria and falciparum malaria. So these sickle cell make them resistant to malaria. So this is an heterozygotic advantage. Again, very important point. Now, genetic load. What does this mean? What happens is that the heterozygous individual carry the deleterious alleles in their genomes. Deleterious allele, that means two different types. So what happens? Sickle cell anemia is inherited by the red blood cell disorder. Normal red blood cells are round like donuts. They move throughout the small tubes in the body and deliver oxygen. All right. Sickle shaped में क्या होता है? ये होता है hard, sticky shaped, and their sickles they are wheat like shape, or the sickles that is used, sickles to cut wheat ऐसे shape के होते हैं. Yeah. This can cause pain, damage and low blood count or anemia. This can lead to a condition of anemia, that is low blood count. Normal beta globin.
व्हाट इज हैपनिंग, ये जो ग्लूटामिक एसिड है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे वेलाइन से. यू कैन सी glutamic acid here is replaced through valine. All right, you see the change here also. Fine. So this is the DNA, mRNA. This is the mutant beta globin, and this is the normal beta globin. क्रोमोसोम 11 में ये होता है, ठीक है. ये होता है नॉर्मल, ये ट्रांसक्राइब करता है mRNA, ये ट्रांसलेट करता है एमाइनो एसिड यानी कि ग्लूटामिक एसिड. सिकल कंडीशन में क्या होता है, HbS जो होता है सिकल सेल सेल्स के वजह से ये ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसलेट करता है वेलाइन को ग्लूटामिक एसिड के जगह पे. कलर ब्लाइंडनेस इज एन X-linked recessive disorder. Let us discuss what is color blindness. So, color blindness is basically vision deficiency or sex-linked recessive disorder. So, it is the inability or the decreased ability to differentiate or see certain colors or perceive difference between two colors. What might be the reason for this? This is because it is due to the mutation in certain gene located on X chromosome. Mutation of a gene located in the X chromosome. The most common inherited form of color blindness are the red-green color blindness. All right. Now, let us move on. ये होता है वापस से X-linked recessive. All right. तो affected father and unaffected mother similarly हेमोफीलिया वाले जो केस था उसके जैसे देखिए कैरियर डॉटर होती है, दोनों डॉटर कैरियर है पर दोनों सेल अनअफेक्टेड है, ठीक है. तो नॉर्मल मेल्स आर 100%. Now, what happens here? The mother herself is not colorblind because the gene is recessive, and जो father है वो है affected, ठीक है. Now it is the effect is suppressed by her matching dominant normal gene. All right. तो ये जो mother का जो unaffected XX जो है ना, ये cause करता है, this basically suppresses the dominant gene. So what happens? Daughter will be colorblind when there is a carrier mother and her father is affected, यानी कि colorblind. Same as it is the case of the hemophilia. So the Ishihara color test, which consists of a series of pictures of color spot, what happens that अलग-अलग color spot के बीच में basically red and green color similar दिखता है, ठीक है. तो ये test Ishihara color test is used to diagnose red-green color blindness. Now, this is the X-linked. Here is the unaffected father and the mother is a carrier. Mother carrier हो और father unaffected हो तो affected son होता है, ठीक है. एक डॉटर कैरियर होती है तो 50% जो चांस है वो कैरियर के एंड 50% है सन अफेक्ट होने के. So this is how the color test is performed. So see here you can see that जो है ना, तो देखिए रेड एंड ग्रीन इस तरह से दिखाई देता है, ये ग्रीन कलर. If a woman carrier for color blindness marries a normal male, woman carrier है वो मैरी करते हैं नॉर्मल मेल को. चलो क्रॉस बना के देख. कैरियर वुमेन सॉरी नॉर्मल मैन, क्या बनेगा? ठीक है. एक सन हुआ अफेक्टेड एंड एक हुआ कैरियर. Half daughters are carriers, 50% are carriers and 50% that is half sons are normal. ठीक है, half are diseased. So it is option D. Now coming to another disease known as thalassemia. So this disease is caused by the excessive destruction of the red blood cells due to the formation of abnormal hemoglobin molecules.
इस थैलेसीमिया में क्या होता है, जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है ना, ये होते हैं अबनॉर्मल कंडीशन में। क्या हम जरा चैट सेक्शन में thalassemia में why is this disease caused? Because it is because again it is a genetic mutation defect and it is a form of deletion. All right, let us see how. What type of mutation is this? So chromosomal mutation. All right, normally what happens, the hemoglobin is composed of 4 polypeptide chains. तो ये होता है hemoglobin का स्ट्रक्चर। इसमें होता है बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा, and they are arranged into a heterotetramer. Alright, so this is what a tetramer is. And now what will happen is, patients have defects in alpha globin chain or beta globin chain, and what they will cause, the production of abnormal hemoglobin molecules. All right, this will result in anemia. जब भी आरबीसी कम हो, abnormal हो, ये सब लीड करता है एनीमिया को. Now, thalassemia of two types. As I said, defect can be either in the alpha globin chain or the beta globin chain. तो ये जो है वो 2 types के होते हैं, ठीक है. One is the the sickle cell anemia caused due to a specific change in the beta chain. All right. Yes. So these are the sickle cells. Now, based on this chain of hemoglobin molecule, thalassemia is classified as alpha or beta. इसे alpha thalassemia को हम कहते हैं Cooley's anemia, and जो beta है देखते हैं कैसे. See, it is autosomal recessive. So here I have a carrier father and a carrier mother. All right. So we have मतलब ये sex linked नहीं है, ठीक है. Thalassemia, no, it is sex linked. Sorry. So we have a carrier mother and a carrier father. Carrier father कैसे हुआ? क्योंकि yes. So see, this is basically what in one chromosome only it is unaffected. So what happens if both are carrier? We have one son is unaffected and one is a carrier. And similarly, the daughter is one is a carrier and one is an affected. So we have 50% chance of both. So in alpha thalassemia, the globin chain is affected and it is controlled by 2 closely linked genes. What are these genes? ये जो closely linked gene है वो है HBA1 and HBA2. Where are these genes located? इसका locus है chromosome 16. याद रखिए, थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया का लोकस है chromosomal 16. Alpha thalassemia is observed due to mutation or deletion of one or more than 4 alpha, one or more of the 4 alpha genes. ठीक है, एक या फिर किसी भी एक से ज्यादा जब हो alpha genes में mutation, सब ये देखा जाता है. The more the genes affected, the less the alpha globin molecules produced. All right. Alpha thalassemia is used due to the impaired production of 1, 2, 3 or 4 alpha globin chains, leading to a relative excess of beta globin chains. तो अल्फा इसमें क्या होता है, क्योंकि अल्फा चेन्स की ये कम हो जाती है एंड उससे क्या होता है कि बीटा जो है वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है एंड ये एक abnormality कॉज होता है. It is also called the Cooley's anemia. In this production, the beta globin chain is affected and it is controlled by a single gene. What is that gene? HBB. In previously we saw it had two genes, but it got controlled alpha thalassemia. Where is it located? It is located on the chromosome 11 of each parent. All right. Beta thalassemia occurs due to the mutation of one or both the alleles.
and beta thalassemia is due to impaired production of the beta globulin chain. ठीक है, अभी क्या अल्फा थैलेसीमिया में क्या था, अल्फा चेन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, बीटा चेन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे and it will lead to a relatively excess of alpha globin chains, just opposite that of the alpha thalassemia. And beta thalassemia is also the most common type that is observed. We have an unaffected carrier father. This is not a sex-linked trait. And we have an unaffected carrier mother. So now what happens? We have 1 out of 4 that males are unaffected. 2 affected carrier, that is 2 of 4. And 1 affected. Alright? तो एक होता है unaffected, एक होता है affected. और दो जो है वो होते हैं carrier. Thalassemia is a chromosomal mutation. Now coming to cystic fibrosis. Cystic fibrosis is basically a result of mutation affecting a gene that influences salt and water movement across the epithelial cell membranes. ये कहाँ पे म्यूटेशन कॉज करता है, ये कॉज करता है म्यूटेशन सॉल्ट एंड वाटर मूवमेंट में अक्रॉस द एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन. ये जीन कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ऑन द लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 11. तो क्रोमोसोम के जो है 2 आर्म होते हैं, एक होता है पी आर्म एंड एक होता है क्यू आर्म. पी आर्म जो होता है वो होता है शॉर्ट एंड क्यू आर्म होता है लॉन्ग. So it is present in the chromosome 7, that is in the long arm of the chromosome 7. The genetic defect causes increased sodium and chloride content in sweat and increased resorption of sodium and water from the respiratory epithelium. So what is happening now? There is an increased resorption of sodium and water. All right. The extracellular chloride causes the mucus that coats the certain cells to be more viscous and sticky. तो अब ये जो mucus content है वो काफी thick हो जाता है and mucus जो वो build-up होना cause हो जाता है in organs such as lungs, pancreas, gastrointestinal tract, and it will lead to the complications and it may lead to death below the age of 5 if it is untreated. So see here how the mucus build-up is shown. Inheritance of cystic fibrosis. So this is the carrier father, this is the carrier mother. So the child does not have cystic fibrosis, all right, and one has cystic and 2 are the carriers, similar to the thalassemia. Similar to the, yes, thalassemia. Fine. Cystic fibrosis due to the abbreviation in the chromosome 7. Now, coming to the next chromosome disorder. And what is a chromosome disorder? It is caused by the error in the number or the structure of chromosome. And where do these occur? They usually occur when there is an error in the cell division. तो जो सेल डिविजन में से जो डिसऑर्डर कॉज होते हैं ना, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट हो सकते हैं उसे कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर. Now, aneuploidy. It is basically a condition where there is a gain or loss of one or more chromosome in a set. तो basically जो chromosome होना चाहिए ना वो ऐसे होना चाहिए, ठीक है. तो अगर यहाँ पे एक gain हो जाए, ठीक है, या फिर एक ये loss हो जाए, ठीक है, सिर्फ मोनोसोमी हो, तब ये कंडीशन को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी. मतलब जो प्लॉइडी है वो गलत हो, is caused by non-disjunction of chromosomes. This might result in a result in this error in the origin of the cells with the deviation from the normal number of chromosomes. So the normal number of chromosome in humans, what is it? The normal number of chromosomes in a human is 23 pairs. यानी कि 46 क्रोमोसोम. तो जब ये नंबर चेंज हो जाए ना तब कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ऑलराइट, एंड दिस विल बेसिकली रिजल्ट इन द डेविएशन, यानी कि 45 हो या 47 हो,
तब कॉज होता है डेविएशन। मोनोसोमी, मोनोसोमी कब होता है? जब एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, यानी कि 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम इज लॉस्ट फ्रॉम अ पेयर, यानी कि एक पेयर में से एक क्रोमोसोम का लॉस होना। मोनोसोमी causes the syndrome called as Turner's syndrome in human females. So basically Turner's जो है वो ज्यादातर human females को भी affect करता है, ठीक है? The trisomy, alright, 2n plus 1. This is found in the Down's syndrome. We had studied about Down syndrome. It is caused by the trisomy chromosome number 21. इसमें क्या होता है कि जो ट्राइसोमी होता है क्रोमोसोम 21 में, ठीक है? एंड इसमें क्या होता था 21 में ट्राई 47 प्लस जो भी हो, मेल या फीमेल हो, एक्स 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 वाई जो भी हो, एंड यस इट विल बी एक्स एक्स और एक्स वाई, ठीक है? एंड इसमें जो था +1। ऑलराइट, तो इसमें हमें ये देखने मिलता था कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो मेंटली रिटार्डेड होता है। उसका जो हेड है इट इज़ वेरी शॉर्ट, इट इज़ अ शॉर्ट स्ट्रेच्योर्ड हेड, एंड that all were the symptoms of the Down syndrome. So when a chromosome is added to the 21st pair, it is called the trisomy. Trisomy basically मतलब क्या? जो 23rd क्रोमोसोम है ना, 21st सॉरी, ये देखिए ये होता है एक पेयर। अब इसमें एक और ऐड हो जाना, एक क्रोमोसोम और ऐड हो गया। इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। ये पाया गया 21st क्रोमोसोम में, ठीक है? एंड इससे क्या कॉज होता है? डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। फाइन, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 23, जब यही कंडीशन ऑफ ट्राइसोमी पाया जाता है 23rd क्रोमोसोम में, इसे कहते हैं क्लिन फिंट्रस सिंड्रोम। फाइन, सो सी what is happening here? Other form of chromosomal effects, deletion। एक पार्ट जो है क्रोमोसोम का डिलीट हो गया, ठीक है? आप देख रहे हैं ये पार्ट जो है कंप्लीटली डिलीट हो गया। डुप्लीकेशन, ऑपोजिट टू डिलीशन, डुप्लीकेट हो गया। इन्वर्जन, ये पार्ट जो है वो इन्वर्ट हो गया, ठीक है? Now you have insertion. A new part is that this part basically goes and insert itself into the another. All right, like in chromosome 4. All right, there is reciprocal translocation, as I told you, Philadelphia. तो एक पार्ट यहाँ से कट होता है, एक पार्ट यहाँ से कट होता है, ठीक है? एंड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा और ये जो पार्ट है ये यहाँ चला जाएगा। रोबस्टोनियन ट्रांसलोकेशन, इसमें क्या होता है? ये पहले होता है, देखिए ये पहले इन्वर्जन होगा, ठीक है? इन्वर्जन होके उसके बाद ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है? तो ये होते हैं टाइप्स। ट्राइसोमी में 21st क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है ना, ट्राइसोमी में जैसे कि मैंने बताया होता है डाउन सिंड्रोम। नाउ meiotic non-disjunction, lack of separation of chromosomal pairs in the first meiotic division of the gamete। तो जब भी फर्स्ट meiotic division के बाद क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते, ठीक है? एंड द मोस्ट कॉमन, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनुप्लॉइडी, एंड दिस में रिजल्ट इन द एनुप्लॉइडी ऑफ 22 और 24, यानी कि 23 +1 और -1 chromosomes। All right, so monosomy, it is basically the loss with resultant abnormal zygote or the fetus usually dies. What happens in trisomy? Again, a gain of a chromosome, Down syndrome, sex chromosome में क्या होता है? Fetus survives with the abnormal gonadal development, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि जब भी 23rd क्रोमोसोम का मोनोसोमी या ट्राइसोमी देखा जाता है, ये दो कंडीशन में जो फीटल है वो अबनॉर्मल गोनाडल डेवलपमेंट यानी कि स्टेराइल होता है। दैट मीन्स इट कैन नॉट reproduce, all right? So the human being is sterile.
एलोसोमल डिसऑर्डर्स यानी कि जो 23rd क्रोमोसोम में पाया जाए, टर्नर्स सिंड्रोम, it is because of the monosomy of the chromosomal 23. So see, in case of the Turner syndrome, इसमें क्या होता है, ठीक है, ये सिर्फ फीमेल में कॉज होता है, क्यों, क्योंकि फीमेल में ना 2 X होने चाहिए, बट यहाँ आपको क्या सिर्फ एक X होता है, एंड एक जो X है वो डिलीट हो जाता है या वो फॉर्म नहीं है, ठीक है। फिर आता है क्लिन फिल्टर सिंड्रोम। मेल में क्या होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए और एक वाई होना चाहिए, बट इधर हमें क्या देखने मिलता है कि यहाँ पे हमारे पास 2 एक्स है, तो ये बेसिकली हो गया ट्राइजोमी कंडीशन, और ये क्या था, मोनोजोमी। इसीलिए क्लिन फिल्टर सिर्फ मेल में होता है, टर्नर्स फीमेल में होता है। So the ploidy of the Turner syndrome is 45 plus XO. XO means basically not. That means nothing is present. And here it is 47 because one is added. 46 हो गया ना, यहाँ पे एक minus हुआ, ठीक है, तो it is 47. That is X X Y. All right. It's not plus. It will be common. It is 47 plus X X Y. Okay, Aruj. Now, individual with this syndrome has a female external genitalia and internal genital ducts, but the ovaries are rudimentary. मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी 23rd क्रोमोसोम में आता है ना, तो वो स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है। तो फीमेल को कौन सा इफेक्ट करता है, फीमेल को इफेक्ट करता है टर्नर सिंड्रोम। Now, let us see Klinefelter syndrome, what it is. So basically, this is due to a genetic disorder in the 23rd pair. ये तो हमें पता है. And the karyotype is 47XXY. This also we have seen. So what happens in a Klinefelter male? It will possess an additional X chromosome, all right, along with the normal XY. तो इसका जो कैरियोटाइप में हमें देखने मिलेगा कि एक एक्स वाई के साथ ये जो है ये है एडिशनल क्रोमोसोम, ऑलराइट। सो द बार बॉडीज आर प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियर ऑफ द सोमैटिक सेल्स, ऑलराइट। बार बॉडी आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर, बार बॉडी सिर्फ मेल में देखने मिलते हैं, तो ये जो है वो न्यूक्लियर के सोमैटिक सेल्स में पाया जाता है। The symptoms of Klinefelter syndrome: hypogonadism, reduced fertility. Oh, sorry, wait. I said that the bar bodies सिर्फ मेल में देखा जाता है, नहीं, मैंने आपको गलत कहा। बार बॉडीज जो है वो basically it is seen in the female. All right, it is basically the inactive in the X chromosome with. ठीक, तो क्लिनफेल्टर्स सिम्टम्स में क्या होता है, हाइपोगोनाडिज्म होता है, रेड्यूस्ड फर्टिलिटी होता है या स्टेराइल होते हैं, हिप्स आर ऑफन राउंडेड। तो देखिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम देखने मिलता है मेल में, बट मेल में जब हम फीमेल के फीचर्स देखे जाए, ठीक है, तो ये जो हिप्स राउंडेड है, गायनेकोमास्टिया यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, सो वी कैन सी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन दैट ऑफ द मेल. So female sexual development is not entirely suppressed. Hypogonadism. So see, this is the gynecomastia. There is an enlargement of the male mammary gametes. So this is how a karyotype of a Klinefelter syndrome looks like. 47XXY. All right. So we have two X here. So non disjunction chromosomes, ठीक है। तो ये हुआ हमारे एग्स। एग्स में क्या होता है कि ये जो एग्स है वो बेसिकली डिवाइड होने चाहिए थे इस तरह, ठीक है। एंड अब क्या हो गया कि ये जो दोनों कंटेंट है वो एक में आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पर्म है वो या तो ट्रिपल ये एक्स 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 बनाएगा, या तो जो स्पर्म है वो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कॉज करेगा, या तो एक्स नॉट होगा यानी कि टर्नर सिंड्रोम। दिस कंडीशन इज वेरी रेयर, ऑलराइट। एंड या तो नॉन वायबल यानी कि वो ओवरी जो है वो नॉन वायबल यानी फर्टिलाइज ही नहीं होगी, ऑलराइट।
In this syndrome, human male is positive for a Barr body, that is Klinefelter syndrome. Now coming to Turner syndrome. What happens in Turner syndrome? एक जो हमारे फीमेल में X होना चाहिए and एक absent है, ठीक है? तो it causes monosomy of 23rd pair of chromosome, where one X chromosome is lost. So the karyotype is 45 and X. So a Turner's female does not show Barr bodies in somatic cells. Short stature, these are the symptoms. Short होती है stature में, all right. Gonadal dysgenesis यानी कि sterile, webbed neck, all right. Broad shield-like chest with widely spaced nipples, that is the male characteristics, all right. कभी फीमेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलते हैं, और अभी यहाँ पे क्या है, वाई तो एब्सेंट है ही और केवल एक एक्स देखने मिल रहा है. सो वी हैव अ -46 में से एक क्रोमोसोम माइनस हो जाता है एंड इट इज 45x. If the karyotype is 44x, then that human being is 44 and x यानी कि 45. Then it is Turner's syndrome. So that is the end of today's class. If you like this video, if you learned something new, please do like, please do subscribe our channel. I'm sure that this will help you in your upcoming NEET examinations, and questions are asked from this topic. Tomorrow mostly we'll have an MCQ session. Please join me at 11:30 a.m. Tomorrow 11:30 a.m. Let's meet. Please do like this video. It is like a great motivation for me, and I promise that I will bring up more videos about more information. And mostly the next topic we will be covering is the molecular basis of genetics. That is the chapter, just the sixth chapter in your NCERT. This is the fifth. So this was the last topic, I guess, and we have discussed almost all the important concepts of this chapter. And please do subscribe the channel. With Unacademy, we promise that you will crack your examinations. Thank you so much for